Wish you very good morning to class. In previous video, we have completed to the chapter heredity and evolution. Now today we are starting now next chapter, that is known as the our environment. In this chapter, that is the last chapter of the second term examination, uh, and in this chapter we have studied the environment, ecosystem, ozone depletion, and managing the garbage. Only 4 point. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जो पेपर बोर्ड का आएगा सेकेंड टर्म का, तो सिर्फ ये 4 पॉइंट से ही बनेगा. इस चैप्टर पर हमको सिर्फ ये 4 पॉइंट से ही डिस्कस करने हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इन्वायरमेंट? तो the immediate surrounding where we live is called our environment. Means everything is surrounding us, including the biotic and abiotic factors, that is called the environment. It has two basic components. First is the abiotic components and second is the biotic components. First of all, जो biotic means है life, biotic means life, and this is the abiotic, it means that is the antonyms without life. Abiotic components, which is include the non-living and the physical surrounding like air at the atmosphere, soil at the lithosphere, and water, the hydrosphere. The physical and the abiotic environmental factor that is influence life are air, temperature, sunlight, soil, moist, and water. First of all, what is the mean of whole sentence? It means कि abiotic components which are surrounding us like a temperature, sunlight, soil, moisture, water, etc. ठीक है, स्टोन्स भी आ जाते हैं इस पर. ठीक है, स्टोन्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, लिथोस्फेयर दिया हुआ है, हाइड्रोस्फेयर दिया हुआ है. व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? दैट इज द एयरी सब्सटेंसेस टू सराउंडिंग अस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और हम लोग प्राइमरी लैंग्वेज में सोचते हैं ना, जब दैट इज कॉल्ड द एयर ब्लैंकेट्स एटमॉस्फेयर को. बट इन अ सेकेंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, एटमॉस्फेयर इज द एरियर इन्वायरमेंट, मतलब हवा का एक घेरा, सराउंडिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. फिर आता है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज नोन एज द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस की जो ऊपरी सरफेस एरिया है, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. ठीक है, फिर आता है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर पे वाटर बॉडीज आ जाती हैं, सी आ जाते हैं, ओशियन आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. एग्जैक्टली अगर हम एक हाइट वाइज अगर हम इसको क्लासीफाइड करें, तो सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोस्फेयर, देन लिथोस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर इज आल्सो डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज. यस, 5 एटलीस्ट में है. तो सबसे पहले आ जाएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आ जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ जाएगा आपका मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. देखिए आइनोस्फेयर तक मेन आपका एटमॉस्फेयर काउंटिंग किया जाता है. एक्सोस्फेयर मीन्स होता है जब हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर, एग्जिट. क्लियर है? सो इंक्लूडिंग द 4 स्टैंडर्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर. ठीक है, 4 स्टैंडर्ड होती हैं. अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. तो दैट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे कीड़े, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं इसी पे. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ इकोसिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इकोसिस्टम्स की, कि द इंटर रिलेशनशिप between biotic and abiotic factor in particular area. किसी पर्टिकुलर एरिया पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटर रिलेशनशिप होता है, उसे हम बोलते हैं
ecosystem. Clear? It means ecosystem is a area specific. ecosystem में area fixed होता है. Without area, ecosystem cannot be exist. Clear? Now, what is the definition according to this book? So both abiotic and biotic components of the environment are inseparable. इंसेपरेबल मतलब ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं. दे आर इंट्रैक्ट टू ईच अदर. ये क्या करते हैं? इंट्रैक्ट. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटर रिलेशनशिप. एंड कीप टू बैलेंस इन द एनवायरमेंट. और ये बैलेंस बनाए रखते हैं. टेंसले 1935 डिस्क्राइब द इंटरेक्शन एज इकोसिस्टम. ए बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. व्हाट इज द डिफिनीशन? So an ecosystem is defined as the interaction of the organism which is other and their physical environment. So organism which other means biotic factor and their physical environment, that is the abiotic factor. Its process both living means biotic and non-living abiotic components. So that is the definition of the ecosystem. In an ecosystem, the living organisms interact with each other through the food chain, with one organism consumer the another. In an ecosystem, have to food chain and food web are belongs, and each organisms to attract. Each organisms attach for a food, shelter, and another resources. Clear? सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. और इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम. ओके, थैंक यू.